Prashant, Rajendra, Smita, lovely to see all of you this very morning. Akshay, Ankit, Om Prakash, Balraj, lovely to see all of you. And all those who have joined me on YouTube, namaste one more time. Welcome to this week's Happy Minds. This is Happy Minds number 1196, if I have got my numbers right. Hmm. Namaste, Narendra, Sonal. Great, lovely to see all of you this very morning. Chaliye, before we start, Acha, those who have joined me for the first time, आप लोगों को हल्का सा in 1 minute, let me share with what Happy Minds is all about. This is a weekly satsang, a weekly get together of seekers who come every week, and we look forward to understanding if there is a better way to living our life in whatever aspect. All our roles, responsibilities जो हम लोग handle कर रहे हैं, can there be a better way to handle our roles? Can there be a better way to do business? Can there be a better way to maintain relationships? Can there be a better way to handle our emotions? Can there be a better way overall to live life? And that's what we do every Saturday. And we call ourselves seekers because we seek a better way. So हम लोग पिछले कई सालों से almost around 27, 28 years we have been here. अभी online है, पहले offline थे, so that's why the number is 1196, just 4 short of 1200. वो जो एक number है, and numbers will keep on coming and keep on going. But the beauty is that there's so many of you who are there, and बोलता ना एक energy आती है to see so many of you coming week after week after week after week. And आप आते हो HM में, it's such a encouraging sign that there are people who are looking forward to making their lives better. So हम लोग चालू करते हैं with meditation, and then we move on from meditation to some success story sharings, and then I have some insights to share, plus the sharing which happens from all the audience of Happy Minds. So that's what Happy Minds is. So Ram Ram Raghu, Namaste Nivedita, रघुनाथ, आज तो आप ही के नाम का भजन लगाया था हमने. Neetu, Sushil, अरे वाह, but Sushil has come, then everybody has come. I think I missed a few names. Many more names went past by. जो जिनके नाम miss हो गए. It's not that I don't have you in my mind, but your names just whizzed past. चलिए, question to all of you before we begin this week's Happy Minds. चलिए, how are you feeling this very morning? कैसा लग रहा है आप लोगों को this very morning? Let me have a quick update on that from your side. Namaste, Prashant. Anji, how are you feeling this very morning? Great day to be alive. Oh my God. Yes. It's always lovely to see, open your eyes and realize you're still alive. Fantastic. Chalo, good. Excited. Jakash, Jakash. बहुत बढ़िया. Very excited from Nagpur airport. भाई नागपुर airport में क्या हो रहा है पूजा? चलो, happy that you're listening from the airport. Lay bhari. So much. Ashwin says wonderful, energetic. ठीक है. And whatever is happening in your life, the only option left with us is to bounce back. And to bounce back, you got to be positive. You got to feel positive. And uh, ये एक इमोशन को लाना जो आपके एक्शंस को अच्छा कर देगा, आपके एक्शन जो आपके दिन को अच्छा कर देंगे, ये इमोशंस को लाना, ये जिम्मेदारी हमारी है. Now, whether you create your own emotions, you have a trigger from outside, the call is yours, the choice is yours, but we have no right. I feel ऐसा मुझे लगता है, we have no right to live in a state of emotions which lower our productivity, and as a result which lower our contribution in the world. So दुनिया को हमारा contribution चाहिए होता है in whatever way. So maybe at home our family needs a contribution. They need us in a certain role. They need us in a certain way. They need to see us in a certain way. So family needs that. Office में होते हैं तो office में people need us in a certain way. Customers need us in a certain way. You go to society, you go to your friends, they need us in a certain way. तो वहां पर उस way में होने के लिए हमें the way they will benefit the maximum from us, in that state we got to, if you want to be in that state, then we got to have the right emotions behind us. So हमारे पास हक नहीं है कि हम उन roles को play करें from a lower level of performance.
our roles should be at a higher level of performance from our side all the times, as many times as possible. तो उसके लिए आपका emotional state बड़ा important role play करता है in you playing your roles. So always check before you check yourself in terms of in the mirror कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ. Before you check that, can we check on this very aspect that मैं कैसा feel कर रहा हूँ या मैं कैसा feel कर रही हूँ. And the more you feel great, the more you increase the chances of doing something awesome in your outside world. चलिए जी, आज का शुरुआत करते हैं. I have to rush to my business forum meeting. We have the CF forum, the Chrysalis forum. उसके अंदर हमारे groups बने हैं. We have a boards which are going to take off from today. So I have an induction meeting at 9:30. So I'm pretty excited about it, and there are a lot of entrepreneurs who are looking forward to it. We look forward to making a great year for ourselves and getting into a structure, getting into a regime, which is going to bring out a very powerful, productive approach from our side. So I'm going to rush immediately after HM for that. And इसलिए फटाफट आगे subject में बढ़ते हैं. So first is our success story for today. So we have the first story from entrepreneur Chrysalis Subhash Dhatonde, and he is from our 41st batch, and he messaged me a day before, sir, we have received an award, AESA award for the best structure, and this is in the category of industrial building, and they're into industrial construction, and they've been doing awesome work the last few years. And Subhash's story is equally inspiring. When I met him in the batch and he shared his story, I think Subhash is also there today. Subhash अगर हो तो ऐसी hello hi कर देना मुझे. I don't know if you're there in today's HM or not. I think I read your name somewhere. You will be there. So Subhash and his team, they got this wonderful award, and I think awards are important. किसी को आज तक मुझे लगता नहीं बुरा लगा है जब उसको अवार्ड मिला है. So awards are great. They are kind of a recognition of the kind of work you do. Not that you should work towards an award, but you should work in such a way that the world is forced to recognize you. And when your world is forced to recognize you, they will reward you. They will kind of appreciate you. And all appreciations, all rewards, all recognitions, they do a world of good to us. They kind of pump us up. They kind of वो बोलते हैं ना एक नज हमें मिल जाता है कि चलो और अच्छा काम करते हैं और बेहतर काम करते हैं. So we're not working for the awards. We work, and then the work attracts the awards, and that's the way it should be. People who have worked for the awards have seldom got the awards, right? They have to buy awards. But people who work for the sake of working, कि हाँ भाई काम करना है, अच्छा काम करना है, so they will attract some awards. So great. Second is success story of another Chrysalis, Celeste Jane, and a few days back, I think a day before, I went for the premiere of his first movie, which he's producing, Alyad Palyad, and it's a Marathi movie, and we were there for the premiere. I've been kind of a part of this journey of Sailesh because he was a part of my tribe batch, and then I know his family and his son. And the best part about this is कि Sailesh ने produce करी है. He's not from the film background or the theater background, but he produced this movie, and along with producing the movie, he had his son Bhagyam, who also played a lead character there in the movie. And the movie came out very good, and we were all so happy to see the kind of जो movie बनी है overall. It is quite entertaining, quite gripping, and Bhagyam played a wonderful role there. So I was there for the premiere, and so just wanted to share this success story. आप लोग जाके देखना. It's a Chrysalis movie, and जो पैसा लगाया है वो तो मिलना चाहिए और भी उसको मिलना चाहिए, and spread the word around to as many people as possible that they should see this movie. And I think nothing works better than word of mouth, because I saw the movie and I liked it, and there's a lovely song in the movie, and where Bhagyam danced. Wonderful dance this boy has done. So I know him from from his childhood days. जो बच्चा था तब से मैं देख रहा हूँ भाग्यम को. He would come with his parents 8-10 years ago as in Happy Minds. So as a 7-8 year young boy, और उस समय भी वो आके सामने आके बात करता था, and which was very surprising, because normally kids don't want to come for any growth oriented lesson. Papa कहाँ ले जा रहे हो, मम्मी कहाँ ले जा रहे हो. He would come, and not only he would come, he would share some things with all of us. And from there to now being on the screen,
the big screen. It has been a lovely journey for him. And so, congratulations, Selish. Whenever you listen to the HM, uh, congratulations to you for this first movie of yours which you have produced. I'm sure it's going to be a hit, and not only you will get your money back, you will get in multiples of that. My love and my blessings to all of you. ओके, रघुनाथ क्या बोल रहा है रघु सर? उल्का प्रोजेक्ट्स की ओर से आपको धन्यवाद. ओके, थैंक यू सो मच. So when I was talking about Subhash की कंपनी है उल्का प्रोजेक्ट्स. So thank you for sharing that. And another sharing is from Sevi K Mohan, and the sharing is, so the HM on the three enemies of happiness was actually what the doctor ordered for me. I've been I've been uh, uh, I've been holding on to all the three enemies and always wondered why I'm not happy. Life was never so simple and clearer to me as you made it in the Happy Minds. Thank you, MG sir. Wow. Thank you, Savi, for sharing this lovely note from his side. I remember last HM. I don't know if you remember or not. Last HM, we spoke about the three enemies to success and the three habits we need to build. Sorry, three enemies to happiness and the three habits we need to build to be more happy in life. चलो देखते हैं किसको याद है. लास्ट HM मैंने कौन सी तीन एनिमीज बताई थी? बताओ कौन किसको याद है और कौन शेयर करेगा? And then I will take a beautiful subject today. A beautiful subject which is एक ऐसा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है मेरा जो मैं आपसे आज बात करूंगा. बट पहले बताओ लास्ट HM के तीन दुश्मन कौन है जो मैंने आपसे शेयर किए थे? आई एम वेटिंग. शाबाश, ये तो पूरा HM ही कॉपी कट पेस्ट किया हुआ है. सुशील बियानी ने तीन दुश्मन हैप्पीनेस के लिए. यार सुशील, आई नेवर न्यू यू वर सच अ सिंसियर स्टूडेंट. यार किसी को डेलीगेट किया था ये? Delegates about the past, anxiety about the future, and being ingrateful about the present. क्या बात है, बहुत बढ़िया. मुझे लगता है ना सुशील would be sitting with somebody with his team member जो बोल रहे हैं सर उसका नोट्स बनाते रहो, नेक्स्ट HM में वही नोट सर को दे देंगे वापस. Yes, I spoke on this, and it is such a simple thing, but while we're living our life, this simple thing is lost by us, and that's why we are not in a state of joy or happiness most of the times, because either we are having some regrets. हमें कुछ ग्लानि होती है, कुछ रिग्रेट्स होते हैं अबाउट द पास्ट. हम कुछ कर नहीं पाए, कुछ चीजें हमारे मुताबिक नहीं हुई. So we are there in the past, or either we are anxious about the future कि future में क्या होने वाला है. And third is we are not grateful to what we have in life as of now. So there's so much to be happy about. There's so much which is going right. There's so much, if you look into your life, अगर pause लोगे, वो pause लेना बड़ा जरूरी है कि अगर pause लोगे, थमोगे, रुकोगे, बैठोगे और पूछोगे अपने आप से, you know, कि लाइफ में क्या सही चल रहा है. ट्रस्ट मी, ऐसा लंबा लिस्ट निकलेगा कि क्या सही चल रहा है. And with all that list which you have with you, even right now, if you would ask yourself, what is going right in my life? And there will be so many things going right in it. You got an entire body functioning well. You can see, you can hear, you have hands working, you have a feet which you can walk on, right? You can, by God's grace, there's no disease in the body. और क्या चाहिए? So you as a person, there are a lot of things happening right to you. There may be a few things which may not be. आपकी वो height नहीं होगी, आपका वो सुंदरता नहीं होगी, आपके बाल नहीं होंगे, ये नहीं हो, जो भी. But still, you have so much more than what you could have got, right? You could have been born in some other way. You could have been, uh, born with something missing. लेकिन body ठीक चल रही है ना? And if you look around, there are loved ones around you. Isn't it amazing to realize that you have your loved ones around you? A big blessing. So अगर आप ऐसा count करोगे ना अपनी blessings को,
कि क्या अच्छा चल रहा है, आपकी किताब भर जानी चाहिए। राइट फ्रॉम द योर फिजिकल सेल्फ टू योर एजुकेशन, थैंक गॉड कि आप ऐसे स्कूल्स में पढ़े हो जहां पर आपको कुछ भाषाएं आ गई, आपको आप अपनी मातृभाषा बोल सकते हो, आप हिंदी बोल सकते हो, आप मराठी बोल सकते हो, आप जो भी आपकी लैंग्वेज वो बोल सकते हो, आप अंग्रेजी बोल सकते हो, समझ सकते हो। देयर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, so many people in the world who can only speak only one language. And if you hear in India, on an average, people speak minimum two languages, and there are people who speak three, four languages. वो भी बहुत common है. So you can speak a few languages. That's amazing, isn't it? You got a job lined up for you where you got a business. कितने लोग हैं जिनका जॉब खतरे में है? कितने लोग हैं जिनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है? So you got your life going well, you got your relatives who are loved ones who are around you, you got your job, your profession. हाँ ऊपर नीचे होते रहता है जॉब में, प्रोफेशन में, but there is still a job. घर में आपके छत तो है आपके पास। हाँ वैसा घर नहीं है जैसा आप चाहते होगे, मे बी इन योर सपने, इन योर ड्रीम्स, but then you have a house. You happen to live in some wonderful city, or maybe and what could be a better place than India to live in? Thank God we were not born in Somalia. Thank God we were not born in a neighboring country, Pakistan. What bigger blessing that we are born in India. Thank God we have such a wonderful culture, a huge history behind us, 10,000 plus years. और आप देखोगे तो लिस्ट इतनी लंबी है कि आपको दुखी होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। There is no question, there is no reason why we should be happy. So whenever you're sad, whenever you're down, whenever you are dejected, जो होता है कभी कभार for whatever reasons, निकल, sit down, pause, पहले थम जाओ, रुक जाओ, stop doing what you're doing, take some time out, and start counting what's happening right in your life. And trust me, in those 5-10 minutes, you will kind of gain back your composure. You will have so many things which you can really feel great about. Am I right or not? Haji, am I making sense or not? हम्म। आज की तो ठंडे क्यों भाई, सब लोग कहाँ हो? हम्म। Only Balraj is listening to me today. हाँ। तो होता क्या है कि कभी कभार हम जो है एक प्रॉब्लम को या एक सिचुएशन को इतना बड़ा कर देते हैं that it kind of blinds everything around us. That ऐसा लगता है कि बस बाकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। Agreed that situation may be difficult, may be big, but then there are still so many things going our way. So वो ध्यान रखना, वो फोकस करना बड़ा जरूरी है। And that's one of the ways, one of the surest ways to be happy and joyful. चलिए आज, और ये एक भयंकर डायलॉग आते हुए फ्रॉम अश्विन श्रॉफ, ही सेज पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट टुडे इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ गिफ्ट। थैंक यू। अरे ये सब है बस समझता नहीं है अश्विन, मानते नहीं है लोग। चलो गुड, थैंक यू फॉर पोस्टिंग दैट। चलिए आज का, लेट मी शेयर समथिंग ब्यूटीफुल विद यू। व्हेन इट कम्स टू individual productivity, when it comes to performance, when it comes to we doing our work, whether it be professional, whether it be personal, when it comes to maintaining a relationship, there is one thing which plays a very powerful role in shaping our actions. One thing which plays a very powerful role in ensuring our actions are the way they should be, and that leads to the results which we get. And that one thing is our approach to any situation. हमारा एक सिचुएशन में अप्रोच कैसे होता है? When we say approach, are we positive to about the situation? Are we negative about the situation? And जो हमारा अप्रोच होगा, आप कभी आप देखो, जो हमारा अप्रोच होगा, वो अप्रोच जो है हमारे एक्शंस को गवर्न करेगा।
if I were to give a simple example to you, let's say you are driving with your spouse or with your wife, and आप जा रहे हो drive करके, and you're going to the market for some shopping, and वो आप जिस रोड पे आप जा रहे हो, there's huge traffic there, और शाम का समय है, and in your mind you already are kind of stressed because आप कह रहे थे जल्दी चलो, एंड अभी जल्दी जो है आप घर से निकले नहीं, ट्रैफिक बढ़ गया, भीड़ बढ़ गई, शाम हो गई है. सो नाउ यू लुकिंग फॉर अ प्लेस ऑफ फॉर पार्किंग फॉर ए कार, बट इन योर माइंड यू आर ऑलरेडी एजिटेटेड. इन योर माइंड यू ऑलरेडी फाइटिंग दिस थिंग आउट कि मैंने कहा था ना जल्दी चलने को, समझते नहीं है, देर हो गई है, अभी भीड़ हो गई है, पार्किंग कहाँ मिलेगी. इन लोगों को लगता है कि हमारे लिए कोई पार्किंग जो है, भगवान हमारे लिए पार्किंग रोक के रखेगा. एंड हाउ डू आई टेल दीज लेडीज, हाउ डू आई टेल द किड्स कि ये सब चीज तुम लोग पहले सोचते नहीं हो. अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एंड आई हैव टू फाइंड अ प्लेस फॉर पार्किंग, और पार्किंग मिलने वाली नहीं, मुझे मालूम है. ऐसा आपके मन में चल रहा है, और आप वो चलते हुए मन में आप गाड़ी चला रहे हो, एंड सडनली देयर वाज अ पार्किंग. एक गाड़ी निकली थी और वो पार्किंग स्पेस खाली थी, और आप ये सोच के पार्किंग तो मिलेगी नहीं, बहुत भीड़ है, लेट हो गए हैं, समझता नहीं है लोगों को, आप इस अप्रोच से गाड़ी चला रहे हो कि पार्किंग मिलेगी नहीं, आप उस पार्किंग को मिस कर जाते. टेल मी इफ दिस हैज हैपेंड विद यू इन सम फॉर्म और द अदर. बताओ मुझे, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ. Hmm. That what the approach which you had, that approach in some way made you, the approach was not very positive, and that approach of yours made you miss out on that situation, made you miss out on that opportunity. Hmm. And on the other side, if you were to see, on the other side, if you were driving your car and you had this in mind, पार्किंग मिलेगी यार, कैसे नहीं मिलेगी, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, कोई तो निकलेगी बाहर, किसी की तो शॉपिंग खत्म हुई होगी, कोई तो बैग वैग भर के निकल रहा होगा, किसी के तो पैसे खत्म हुए होंगे, कोई तो अपना पर्स खाली करके बाहर निकल रहा होगा, मिलेगी यार, ऐसे कैसे, इतनी बड़ी रोड है, पार्किंग नहीं मिलेगी, ऐसा हो सकता है क्या. एंड यू आर ड्राइविंग योर कार विद दिस थॉट, दिस इज द अप्रोच यू हैव इन योर माइंड. ट्रस्ट मी, very high chances that you will get the parking. This is how it is. क्या बोल रहा है रघुनाथ सर, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है. So this is called approach. This is called approach. अब हमारा अप्रोच क्या है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज को लेके, वो हमारे एक्शंस पे बड़ा इम्पैक्ट करता है, और फिर हमारे एक्शंस जो है हमारे रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट करते हैं. तो आप एग्जाम देने जा रहे हो, इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ, इफ यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम्स, एंड द एंटायर अप्रोच ऑफ योर्स टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन इज, जो मैंने पढ़ा है वो तो नहीं आएगा, जो मैंने नहीं पढ़ा है आज उसी में क्वेश्चंस आए. नाउ दिस इज द अप्रोच टू लाइफ, दिस इज द अप्रोच टू योर क्वेश्चन. You're a salesperson and you're on the field to make a call, and your approach in that sales call is, I don't think I'll get a sale today. This guy looks tough. This guy will not get convinced. I'm sure a competition जो है वो आके पहले pitch करके गया होगा. Now the approach is going to make your sales call very difficult. The approach is going to make your examination activity very challenging. That's power of an approach. And you see this approach in all the situations you're into. तो आप जब किसी सिचुएशन को मीट कर रहे होते हो, सिचुएशन सामने आप मीट कर रहे होते हो, you go with an approach, and that approach makes a lot of difference. So the question is, which you should have in your mind is, ये अप्रोच आता कहां से है, ये अप्रोच आता कहां से. So let me give you some insight on where do we get this approach from. One of the reasons, the uh, causes of approach, not the only cause, one of the causes of, and it's a very powerful cause for this approach of ours. हमारा अप्रोच अक्सर आता है फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेशंस. हमारा अप्रोच अक्सर आता है फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेशंस.
एक किसी ने बहुत बड़ा लंबा ऐसे लिखा हुआ है. Let me just read this, Mayur. Thank you for sharing this, Mayur. Let me just go through this. Was hired for different than what I'm working on. I'm trying to upskill, but it's tough. I'm scared of being laid off. The situation is hitting my confidence hard. How should I approach this and what actions can I take? Hmm. Mayur, listen to me the next few minutes or maybe the next whatever time I'm speaking. Listen to me like your life depends on this. Maybe today's HM is for you. Maybe. And I connect with what you're going through. So from a company where you were successful, now you joined a company where you feel the environment is different. You feel your skill sets are not up to the mark as per the requirement of the company, and you're scared. You're saying you're scared that you may be laid off, and it is hitting your confidence. Listen to me. Now, when I talk about approach, so our approach of work, this is a very apt example जो मयूर ने लिखा है सामने, and I'm just sharing this from what he has written there. My approach to my daily work is that I may be fired. They may ask me to leave the job. They may just ask me to go home. अब इस अप्रोच से मैं अपना काम कर रहा हूं, तो मेरे काम करने की जो क्षमता है, काम करने की जो कैपेबिलिटी है, मेरे काम करने से जो आउटपुट निकलेगा, वो तो नीचे जाने वाला ही है. This approach is not going to make my actions any better. This approach that I may be fired, this fear which I have, and this is the fear I'm having in myself every time when I go to the office. So this fear is not going to make me act in a way which will help the company or help me also. So कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस टूटेगा इस अप्रोच के साथ. So ये समझना है कि अप्रोच जो है ये आता कहां से. The approach comes from many factors, but one of the major causes of approach is it comes from expectations. हमारे खुद से एक्सपेक्टेशंस क्या, दूसरों के हमसे एक्सपेक्टेशंस क्या है. आप देखो ना कि आपके जब सपोज लेट्स से आई गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेक्टेशंस. आपके ऑफिस में कोई कोई है कलीग आपका, एंड you have an expectation of that this guy is you have an expectation of this guy that this guy is very skilled and capable. जब आपके मन में उसके प्रति एक्सपेक्टेशन है कि यार ये दिस गाय इज स्किल्ड एंड केपेबल, और ऐसा भी एक्सपेक्टेशन हो सकता है दिस गाय इज वेरी हेल्पफुल, तो आपका अप्रोच टुवर्ड्स हिम विल बी बेस्ड ऑन दिस एक्सपेक्टेशन दैट दिस गाय इज वेरी हेल्पफुल, ये मदद करता है, तो आपका अप्रोच उसके प्रति विल बी बेस्ड फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ योर्स. बट अगर आपका एक्सपेक्टेशन मन में कि यार ये दिस गाय डजंट हेल्प, तो इससे तो उम्मीद ही नहीं करनी कोई हेल्प की, योर अप्रोच टुवर्ड्स हिम विल बी वेरी डिफरेंट. तो आपको चेक करना है कि व्हाट एक्सपेक्टेशंस यू हैव ऑफ फ्रॉम यू, फ्रॉम योरसेल्फ. तो दूसरों का एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है वो तो एक बात है, लेकिन आपका खुद से एक्सपेक्टेशन क्या है. आप जिम जा रहे हो, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है खुद से कि कैन यू डू 1 hour ऑफ एक्सरसाइज, या आपका एक्सपेक्टेशन खुद से ऐसे ही है कि यार मैं तो आई थिंक 15-20 मिनट कर लूं बहुत है. एंड द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन यू हैव इज द काइंड ऑफ अप्रोच यू विल हैव टुवर्ड्स द जिमिंग. The kind of expectations you have from yourself in your workplace will have an impact on the approach you have in the workplace. अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है खुद से कि आई एम गोइंग टू परफॉर्म वेल इन द वर्कप्लेस, तो आपका अप्रोच अपने वर्कप्लेस में अलग ही हो. You debate this, you disagree with this, you throw this statement of mine in the dustbin, it does not matter because this is the fact. Our expectations play a major role in our approach in any situation. आप सेल्स कॉल पे जा रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है. डू यू एक्सपेक्ट दैट यू विल क्लोज द सेल, और डू यू हैव एन एक्सपेक्टेशन दैट ये तो होने वाला नहीं है. दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ योर्स विल मेक अ डिफरेंस इन योर अप्रोच, एंड दैट अप्रोच विल मेक अ डिफरेंस इन योर एक्शंस. तो सुबह उठते हो आप,
What is the expectation from the day? What's the expectation? And that expectation will have an impact on your approach. And approach leads to actions. Anji. So we have expectations from ourselves and we have expectations from people. Whatever expectations we have from ourselves has an impact on our approach. Whatever expectations we have of people, we have an impact on our approach with them. That's how simple it is. In 1960, अब ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूं. It will give you some kind of a handle on what I'm saying. In 1960, Dr. Rutherford नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इन सैन फ्रांसिस्को. ऐसा मैंने पढ़ा. In one school, he did an experiment. उस स्कूल में इन्होंने 3 टीचर्स को सेलेक्ट किया and they were called to the principal's cabin. And the teachers were told that amongst all the teachers in the college, in the school, we found you 3 the most sincere of the teachers. तो आपका पूरा overall हमने देखा past and we found that you are very sincere and you are the best suited for the role which we have for lined up for you. तो ना कहा ठीक है, that's nice, thank you so much sir. करना क्या है हम? तो the teachers were told, ये जो 3 टीचर जिनको सिलेक्ट किया गया था, they were told कि हमने जो है at certain grades हमने स्कूल में सबसे ब्राइट बच्चों को हमने इकट्ठा किया है, ग्रेड वाइज ऑफ कोर्स. एंड उस ग्रेड में जो ब्राइटेस्ट है हमने सारे क्लासेस में निकाल के उनको एक क्लास में डाला है जिनका आईक्यू अच्छा है, जो ब्राइट है. और ऐसे करके हमने 3 क्लास बनाई. और हम चाहते हैं कि एज टीचर्स यू शुड बी विद देम. तो हर टीचर को एक एक क्लास देंगे एंड इन दिस क्लासरूम द ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट जिनकी हाई आईक्यू है वो स्टूडेंट्स हम आपको दे रहे हैं. एंड वी बिलीव दैट यू विल मेक देम go beyond their performance by 30 to 40%. क्योंकि आप सबसे अच्छे टीचर आप हो और आपको हम ब्राइटेस्ट स्टूडेंट दे रहे हैं. तो फिर आप लोगों ने, मुझे लगता है कि आप लोगों ने, ऐसा उन्होंने प्रिंसिपल ने कहा कि आई एक्सपेक्ट that you bring out the performance from these students by 30 to 40%. And since we are a school and we don't want any partiality to happen to be seen by people or to be talked about, तो आप अपने स्टूडेंट्स को मत बताइएगा कि they are the brightest. So but we are telling you that they are the brightest and the most smartest in their category in the school. So ये आपको मालूम है लेकिन बच्चों को नहीं मालूम है. So for their sake, let it be a secret. ऐसा करके उन्होंने टीचर्स को वो उस एकेडमिक ईयर की क्लास दे दी. The teachers went about doing their jobs the entire year. So class में जाते थे, they started teaching to the brightest students there. The students had some questions, they would answer. The teachers prepared at home because भाई कुछ questions हैं तो उसके आंसर आने चाहिए. Some students they could not cope up, so they pushed them and they ensured that they gave extra hours, the extra time because ये बच्चे ब्राइट है और इनका 20-30% तो इनका अपग्रेडेशन होना चाहिए, रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए. ऐसा करके पूरा साल निकला. And at the end of the year, all the 3 classes, they outperformed all other classes in the school. इन बच्चों का रिजल्ट सबसे अच्छा है. Not only in the school, in the entire district, these 3 classes did the best. So these 3 teachers were very, very happy. बहुत खुश हुए and so they were called to the principal's cabin one more time. और उनको बुलाया गया and they said congratulations. The principal said congratulations to you. आपकी क्लासेस ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. Almost 30% average growth बढ़ी है सबकी. And the principal says, sir, we are very happy and we are very thankful to you कि आपने हमें सबसे ब्राइट बच्चे दिए and ये तो हमें करना ही था. That with the brightest of students, ये रिजल्ट्स तो आने ही चाहिए थे. And thank you for giving us these students. So principal said, yeah, that is wonderful that you put an effort and ये बच्चों ने इतना अच्छा किया, but there is something we want to share with you. कहते हैं क्या? तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था आपके साथ. एंड एक्सपेरिमेंट वाज दैट ये जो बच्चे आपको दिए हमने, इनमें से कोई ब्राइट नहीं था.
हमने इनको रैंडमली सिलेक्ट किया था। ऐसा कोई था ही नहीं कि हमने इनका आईक्यू सिलेक्ट करके हमने इनको आपकी क्लास में डाला। ये सब ऐसे रैंडमली हमने सिलेक्ट किए, उस ग्रेड में से जितने भी सेक्शंस थे, सब सेक्शंस में से हमने कुछ बच्चों को उठाया रैंडमली और हमने आपको एक क्लास बना के दे दिया। सो देयर वाज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट these children, and the teachers were in a shock. ये ordinary है, ये they were just normal students. Yeah, they were normal students. And then the principal said, because your expectation of them was different, so your approach towards them changed. Your expectation was ये तो ब्राइट बच्चा है, इसको तो आना ही चाहिए समझ में। तो आपने अपना अप्रोच चेंज किया, आपने कुछ नए तरीके से सिखाया उसको, आपने एक्स्ट्रा आवर्स दिए उसको, क्योंकि आपको लगा ये तो ब्राइट है, इसको समझ में तो आएगा, इसको तो आएगा आएगा। तो आपने गिव अप नहीं किया उस बच्चे को, बिकॉज यू वर टोल्ड, यू हैड दिस इन योर माइंड। तो जो आपको एक हमने एक्सपेरिमेंट के रूप में आपको हमने एक झूठ बोला, आपने उस झूठ को सच माना, उस झूठ से आपने अपनी अपेक्षा उन बच्चों के साथ रखी, और उस अपेक्षा से आपका अप्रोच चेंज हुआ। एंड यू स्टार्ट गिविंग देम मोर आवर्स, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग मोर फॉर देम, कि इस बच्चे की तो ब्राइट बच्चा है, इसको और कुछ नए तरीके से समझाऊंगा, शायद इसको समझ में आ जाए। सो यू चेंज योर ओन टीचिंग स्टाइल। लुक एट द पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन, ये क्या करा सकता है। एंड टीचर्स वर अम्यूज्ड। एंड देन द प्रिंसिपल सेड, होल्ड ऑन, हेलो होल्ड ऑन, सिर्फ यही एक्सपेरिमेंट नहीं था, हमने एक एक्सपेरिमेंट और किया। कहते, अब क्या किया आपने? He says, आप भी ब्राइटेस्ट नहीं थे amongst the teachers. You are also not the brightest amongst the teachers. हमने भी आपको randomly select किया out of all teachers. And they were in a shock. अच्छा, we are also not the bright. पहले तो उनको बुरा लगा, अच्छा we are not the brightest. You were just selected randomly. हमने आपको बोला you are the brightest. तो आपने खुद से अपेक्षा कर लिया, अरे मैं तो ब्राइट टीचर हूँ, मैं तो सबसे स्मार्ट टीचर हूँ स्कूल का, मैं इस बच्चों को कैसे समझा नहीं पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ना और काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, क्योंकि मैं तो सबसे अच्छा हूँ। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ गई कि मैं तो सबसे अच्छा टीचर हूं, तो आपने अपना अप्रोच चेंज किया, एंड यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट अदर वेज बाय व्हिच यू कैन ट्रेन एंड टीच। यू स्टार्ट गिविंग मोर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, बिकॉज आप सबसे अच्छे टीचर हो, ये आपको बोला गया और आपने मान ली उस बात। पकड़ में आया क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपकी खुद से अपेक्षा क्या है? जब आपकी अपेक्षा खुद से, खुद के बारे में, आपकी अपेक्षा खुद से दूसरों के बारे में, वो मैटर बहुत करती है कि आपका अप्रोच खुद से और आपका अप्रोच दूसरों से क्या हो। So what expectations you have of people around, and what expectations you have of you. तो always keep on checking कि मैं खुद से, और हम जाने अनजाने में हमने इतना लोअर कर रखा है अपना एक्सपेक्टेशन खुद से, कि हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते खुद से कुछ बड़ा अच्छा काम हो जाए। हम तो सर हैवी ही हैं, हम तो ऑर्डिनरी है, हम तो फलाना है ढिमकाना है। तो खुद से हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कुछ बहुत अफलातून काम कर जाएंगे। खुद से उम्मीद ही नहीं है कुछ कि कुछ बढ़िया काम हमारे हाथ से निकल जाएगा। और जब खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो फिर अप्रोच कैसा होगा अच्छा? और जब अप्रोच अच्छा नहीं होगा, तो फिर एक्शन अच्छे कैसे होंगे? सो चेक आउट ऑन योर एक्सपेक्टेशंस। चेक आउट, क्या खुद से आपके एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना कि यू गो टू अ गुड ब्रांड, मे बी यू गो टू अ ताज होटल, तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि ताज में जा रहे हैं, तो ताज के कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, तो आप एक्सपेक्ट करके जाते हो कि अगर ये तो लेवल का होटल मिलेगा हमें, और फिर आपका अप्रोच वैसा हो जाता है उसको देखने, बिकॉज यू हैव एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑफ ताज फ्रॉम देयर। तो आपको खुद से पूछना है कि व्हाट एक्सपेक्टेशंस आई हैव ऑफ माई सेल्फ। मेरे फिजिकल सेल्फ में मेरे एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरे बिजनेस लाइफ में मेरा एक्सपेक्टेशन खुद से क्या है? इन ऑल द रोल्स व्हिच आई एम प्लेइंग, व्हाट आर माय एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर माय ओन स्टैंडर्ड्स व्हिच आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ?
And there you will see the moment you take expectations up, your approach will change. Or whatever expectations you have, that's the approach you have. Hmm? और जो अप्रोच लेके आप जाते हो किसी सिचुएशन में फिर वैसे रिजल्ट मिलता है. So Mayur, when you ask this question, that I'm how should I approach this and what actions can I take? First of all, expect. अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो पहले वो तो करो. Whatever your current situation is right now, keep it aside. Ask this question to yourself. What do I expect from myself? And the moment you have this clarity, you will start working on yourself. अगर वो technology different है, नहीं है, what expectations you have of yourself? Well, I can learn this technology. कौन सी बड़ी बात है? सब चीज सीखी है ना दुनिया ने. कोई थोड़ा सीखा सिखाया आया कहीं से. So people have learned, I'll also learn. So I have expectations for myself that I can pick up the language like this. Give me a week, give me a 10 days time, give me a month's time. I can pick up this new language, this new technology. The moment you have an expectation like this, the approach will change. You will go with a learner's approach. You will go and talk to people around. You will ask them questions. You will see what best, how the world can support you. आपका पूरा approach change हो जाएगा. So tell me, what have you understood? Hmm? My boss used to say that. Set your expectations right. Different now, it has a wider perspective, of course. Set your expectations right. Self expectations force us to make things happen in our way. तो वो टीचर्स they were not excellent teachers ना, बट उनको बोला गया कि you are exceptional teachers, तो उनकी खुद से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई. तो आप ये भी देखो ना, आपका कम्युनिकेशन आपके टीम के साथ, आपका कम्युनिकेशन आपके बच्चों के साथ कैसा है, आपका एक कम्युनिकेशन आपके आसपास के लोगों के साथ कैसा है. इज इट मेकिंग देम फील दैट दे कैन एक्सपेक्ट हायर फ्रॉम देमसेल्व्स, या आपकी कम्युनिकेशन ऐसा हो रहा है कि उनको खुद से उम्मीद नहीं हो रही है, वो कहते हैं यार मेरे मेरे पेरेंट्स को मुझसे उम्मीद नहीं है, मैं क्या उम्मीद करूं. What if the communication is that I know you can do well, I know I know you can do very well, and one is that you can't do anything, I don't expect anything from you, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा. तो आपकी एक्सपेक्टेशन दूसरों से क्या है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत कुछ करवा सकती है दूसरों से, आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से बहुत कुछ करवा सकती है. तो दिस इज काइंड ऑफ जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इट्स कॉल्ड डबल, इट्स अ डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट. तो both the parties were blind. The students did not know the teachers are ordinary. Teachers did not know the students are ordinary. But both expectations played a major role there. I had a similar fear of cracking, say, fragile exam, but I started after 1 year. After seeing it was simple to crack. Then, great. It is absolutely. The expectations will make you, believe in yourself and not believe in yourself. So expectations दो तरह की होती है, एक आप जो खुद से एक्सपेक्टेशन करते हो और एक जो दुनिया आपसे एक्सपेक्टेशन करती है. कभी कभी क्या होता है, हमें प्रेशर लगता है एक्सपेक्टेशन से, हमें लोड लगता है. इट्स ओके, नथिंग इज as absolutely right. There are some gray areas always. कोई भी चीज बिल्कुल 100% सही नहीं रहती है. So I'm not saying that expectations का हमेशा होना अच्छा होता है, वो लोड भी लाता है, प्रेशर भी लाता है, पर ठीक है, वो ग्रोथ भी तो लाता है. अब सब चीज आपके मुताबिक थोड़ी नहीं होगी. यू हैव टू लर्न हाउ टू, यू हैव टू हैव द मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड दैट. बट अगर आप वे करोगे कि एक्सपेक्टेशंस के बेनिफिट्स क्या हैं और एक्सपेक्टेशंस के पेरिल्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, तो बेनिफिट्स हमेशा हावी होंगे, बड़े होंगे, ये बात तो पक्की है. सो
That's what I had to share with all of you uh, this very morning. And expectation, I should be able to learn new tech approach. You got it right, Mayur. Absolutely. We'll start. Hmm? So you expect, what do you expect from yourself? You expect to retain the job. You expect to excel in a job. You expect to learn a new language, right? And that will lead to an approach. The approach will be, right? You start looking out for people who can help you. You can start looking out for programs around you, which can give you some clarity. And then the action is that you do that program and you make your presence very powerful in the company. That's how it is. So this is what I had to share. Will take a. It's almost 8 o'clock, and I need to rush today for my entrepreneur forum meeting. And I'm sure you had a lovely, insightful, happy minds today. And I'll meet you next HM. Till the time you take charge of your life and make a great, fruitful week for yourself. What's the difference between approach and attitude? The difference between approach and attitude is the same as satisfaction and santosh. समझ में आया संतोष? जो संतोष और सेटिस्फैक्शन में डिफरेंस है वही उसमें सोचते रहना. चलो, God bless you all. I'll take a early break this time from Happy Minds, and we have Life 360 batch coming up. If you want to invite your loved ones for Life 360, do send them over for Life 360. It's just a few days to go from now. I'm excited about the batch. We got some lovely participants in the batch, and all are ready to go. All are excited to be a part of it. So if you have your loved ones, you want them to be there with me for a few days. So 21, 22, 23 June का एक समय है. And we got lovely nominations from companies. We got youngsters coming in. Parents have sent their children. We got entrepreneurs coming in there. And let's look forward to our great batch. And if you have anybody, do send them over. The more, the merrier. Chaliye ji, God bless, and see you next Happy Minds. God bless you. Love you. Navnath, Ankit. अंकित होता है, शिवांगी होती है, मुझे समझ नहीं आता है. डबल गेम खेलते हैं कुछ लोग. चलो, गॉड ब्लेस यू संगीता, चंद्रमोहन, रघुनाथ, अंकित, प्रशांत, स्मिता. प्रशांत नायर भी आज आए हुए हैं, क्या बात है.